Hello students, this is Vikanshi Sharma and today we are going to study our next topic, that is the various methods by which you can determine the order of a reaction. यानी कि वो ऐसे कौन से methods हैं जिनकी help से आप किसी भी reaction का order determine कर सकते हैं. So let's start that. Before starting this topic, one thing you must remember is that you cannot determine an order theoretically. दैट मीन्स कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म ना करें और सिर्फ अपने एक सिचुएशन को देखे बिना आप सिर्फ एक स्टेटमेंट के बेसिस पे ये डिटरमाइन कर पाएँ कि वो कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉलो करेगी, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है. सो फॉर दैट पर्पज़ यू मस्ट परफॉर्म अ प्रैक्टिकल. सबसे पहले हमें एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करना होता है और उस प्रैक्टिकल से हमें जो भी डेटा ऑब्टेन होगा उस डेटा को हम अपने डिफरेंट मेथड्स के अंदर अप्लाई करके ये डिटरमाइन करते हैं दैट व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. सो आफ्टर ऑब्टेनिंग द डेटा प्रैक्टिकली, जब हमें प्रैक्टिकली डेटा ऑब्टेन हो जाता है, आफ्टर दैट देयर आर वेरियस मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस. सो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन. Our first method is graphical method and as per this method what you have to do, आपको सबसे पहले तीन चीज़ें पता होनी चाहिए किसी भी प्रैक्टिकल के अंदर ग्राफ प्लॉट करने से पहले. जब आपने उसका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया, आपको डेटा ऑब्टेन हुआ, द फर्स्ट थिंग यू शुड नो इज द ए, दैट मीन्स द कंसंट्रेशन. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज लॉग ए, यानी कि लॉग ऑफ कंसंट्रेशन, एंड द थर्ड वन इज एक्स अपॉन a minus x. Whenever you get these three values, आपको जब भी ये तीन values पता चल जाएंगी, after that you can plot a graph. अब आपको क्या करना है, इन तीनों values को एक एक करके against time versus time एक ग्राफ पे प्लॉट करना है. So what you will do, you will plot three graphs. On one axis there will be time and on second axis, that means on y axis, one will have the concentration, second will have the log concentration, and third one will have x upon a minus x. After plotting, making these three plots, what you have to do, you have to mention the values. अब आपको यहाँ पे जो values हैं उन्हें mention करना है at different time interval. तो इन तीनों ग्राफ्स में से किसी एक ग्राफ में एक बार में सिर्फ एक ही ग्राफ में लीनियर कर्व शो होगा. इफ इट इज शोइंग अ लीनियर कर्व इन द फर्स्ट ग्राफ, then it is a zero order reaction. If it is showing a curve in second graph, linear curve, then there will be no linear curve in first graph. It will either show declining or increasing, but only once at a time. So if it is showing a curve in the second graph, then it is first order, and if it is showing a linear curve in the second graph, third graph, then it is a second order reaction. So this is the first method, that is the graphical method. What you have to do, you just have to determine whether in which graph it is showing a linear curve. That will determine the order of reaction. The second method is the substitution method. As the name indicates, as it is a substitution method, so what you have to do, you have to just take the data from the experiment and plot the values or substitute the values in this data. So when it comes to a zero order reaction, whenever it comes to a zero order reaction, whatever the value you will obtain for k, just put the values in the equation for k and t half. When it comes to first order, put the value in k and t half equation, and similarly put the values in the second order equations as well. So after putting these values in these equations by substitution method, the equation we obtained during the kinetics, I have mentioned it in my previous lectures, you can check my previous videos as well. तो उसके अंदर आप देखेंगे कि जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर के लिए आपके पास डिफरेंट इक्वेशंस आए हैं. आप उन्हें इक्वेशंस के अंदर इन वैल्यूज़ को पुट करके सेकंड ऑर्डर के लिए जो भी आपकी k वैल्यू है या फिर जो भी आपकी t हाफ वैल्यू है उसमें आप इन वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल द t हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.693 over k. Similarly, the k value is 2.303 upon t log
log A upon A minus x. So you can put these values in these equations, and whatever value will be obtained will determine the order of reaction for that particular purpose. After that, the third method and the most difficult, or you can say method which we have not studied yet, is the third method, that is the half-life method. So let's discuss that. So whenever it comes to a half life method, remember one thing कि जब भी आप half life method की बात करेंगे तो zero order, first order और second order reactions में तीनों का अपना अपना एक half life होता है. तो जब आप बात करें zero order की, in this case the T half is equals to A upon 2 K naught. So this is the T half for zero order reaction. For first order it will be 0.693 over K1, and for second order it will be 2 upon AK2. So these are the various equations, these are the various half-lives. So from these half-lives you can determine that in a zero order reaction, half-life is directly proportional to concentration. That means whenever the concentration will increase, T half will also increase. In the case of first order, it is independent of initial concentration. Whatever initial concentration you will take, it is not going to affect the half-life of first order reaction. And when it comes to a second order reaction, in case of second order reaction, the initial concentration is inversely proportional to T half. That means जितना ज़्यादा आप initial concentration को बढ़ाएंगे, T half उतना ही कम होता चला जाएगा. So from these equations, a common derivation, a common equation is derived. उस equation में कहा गया कि T half और initial concentration के बीच में क्या relationship है. So the concentration and T half relationship is this. इट इज़ द रिलेशनशिप. दैट मीन्स अगर आप यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो द रिएक्शन विल बी ए 0-1. दैट मीन्स 1 upon A inverse, and it is definitely going to show the inversely proportional. Similarly, for first order there will be nil initial concentration, and for second order it will be in inversely proportional relationship. So by using this equation you can determine the half life. So by after this you have to put the log. But before remember is, let us assume there are two equations. हम assume करते हैं कि हमारे पास में दो equations हैं. Second thing, हम ये भी assume करते हैं कि उन equations में initial concentration अलग अलग थी. So the two equations will be, first thing हम ये मान के चलते हैं, this one is for equation 1. This is the T half of equation 1 for reaction 1, and this is the T half of reaction 2. ये आपके इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के टी हाफ्स हैं. हम यहाँ पे सिर्फ मेंशन कर रहे हैं दिस वन इज फॉर इक्वेशन 1 एंड दिस वन इज फॉर इक्वेशन 2. नाउ पुटिंग दीज एज अ रेशियो, for equation 1 and for equation 2, this one is equation 1 and this one is equation 2, you will get the values. This is for equation 2 and this is for equation 1. तो ये आपके पास में वैल्यूज आ जाएंगी. आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पुट द लॉग ऑन दिस इक्वेशन. So this is the equation which will be derived, and at last for determining the order of reaction, here n is the order of reaction, so n minus 1 will be this log T half of first divided by T half of second upon this multiplication value will go to the denominator, log A of second reaction upon A of first reaction. So by this value you can determine minus 1.
So this is the equation which will be derived at last, and by putting the value of T half values of both equations and the initial concentration of both equations, you can determine the order of reaction. अगर आपके पास में दो equations हैं तो आप उनकी help से determine कर सकते हो कि इनका order of reaction क्या होगा. So these are the various methods for determining the order of reaction. In our next lecture we will study the various physical and chemical factors which are going to affect the drug degradation. Thank you.